So, good morning, everyone. Very warm welcome to babycode free IELTS sessions. I'm Tanu Vermani, an ITP certified trainer and a TESOL and TEFL certified trainer. So, I'm back with my 15 days IELTS course, and today is our live session 1. So, आज हम अपना live session 1 कर रहे हैं 15 days IELTS का, and the topic जो हम cover करने वाले हैं reading module में, it's about true, false, not given, matching heading questions and matching information questions. So 3 type of questions हम cover up करने वाले हैं. So this is 15 days IELTS. 15 days में कैसे आप अपना IELTS crack करोगे? Let's see. Today we are beginning with the reading module, and the first topic is true, false and not given questions. So true, false, not given questions. True, false, not given questions होते क्या हैं? ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चन ये वो टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको लोकेट करना है और आइडेंटिफाई करना है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को. यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो आपकी प्रेजेंट होती है टेक्स्ट में वो एज अ फैक्ट प्रेजेंट होती है, राइट. सो इंफॉर्मेशन जो टेक्स्ट में होती है वही ऑर्डर आपका फॉलो करता है क्वेश्चन में. दैट मीन्स आपके क्वेश्चंस का सीक्वेंस और आपके आंसर्स का सीक्वेंस, दैट मीन्स आपके टेक्स्ट का सीक्वेंस सेम रहता है. सो इन्फॉर्मेशन यू नीड फॉर द फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको सबसे पहले मिलेगी, देन आपको सेकंड के लिए मिलेगी, राइट. सो दे आर इन ऑर्डर. सो व्हेन यू रीड अ स्टेटमेंट यू हैव बीन गिवन, देन आपको डिसाइड करना है कि इन्फॉर्मेशन क्या आपको हेल्प कर रही है और आपका आंसर क्या है. सो ट्रू मीन्स बिकॉज द स्टेटमेंट एग्रीज विद द इंफॉर्मेशन. ट्रू का मतलब होता है ट्रू statement agrees with the information. False statement contradicts the information. Not given because वहां पे कोई information ही नहीं है. When there is no information in this. True का मतलब जब statement agree करती है information के साथ, that means exactly वहां पर available है. False होता है जब statement contradict करती है, और not given होता है जब वहां पे आपको कोई information ही नहीं दिया, right? So let's look at some of the strategies. कुछ strategies देखते हैं हम, right? Few strategies. Some of the strategies for true, false, not given जो आपको keep in mind रखनी है, right? First is the questions are asked in the same order in which the text or information is given. So questions आपके same order में होते हैं, जैसे आपको text given है या आपको information given है. In order to know the correct answer, you need to understand कि टेक्स्ट आपका क्या है, राइट. चेक करो कौन सा फैक्ट गिवन है आपके टेक्स्ट के बारे में, ट्रू है, फॉल्स है कि नॉट गिवन. फर्स्ट पैराग्राफ को केयरफुली रीड करो, ट्राई टू आंसर करो क्वेश्चंस को. अगर आपको मिल जाते हैं, डू नॉट रश टू राइट. पहले सेंटेंस को केयरफुली रीड करो, फिर डिसाइड करो कि आपका आंसर करेक्ट है कि इनकरेक्ट है. व्हेन यू डोंट फाइंड द आंसर, अगर आपको नहीं मिल रहा फर्स्ट पैराग्राफ में, सेकेंड पैराग्राफ में मूव करो और रिपीट करो उसी प्रोसीजर को. यू हैव टू रीड द इंफॉर्मेशन टेक्स्ट केयरफुली. आपको केयरफुली रीड करना है टू फाइंड कि कीवर्ड्स क्वेश्चन में जो प्रेजेंट है कि नहीं है और कौन से कीवर्ड्स प्रेजेंट है. यू हैव टू कीप इन माइंड कि टेक्स्ट आपका पैराफ्रेज रहेगा. पैराफ्रेज मीन्स द क्वेश्चन मे बी वर्डेड विद सिनोनिम्स होंगे, डिफरेंट वर्ड्स होंगे, ठीक है. तो आपको वो चेक करना है. लुक एट द कंट्रोलिंग वर्ड्स. कंट्रोलिंग वर्ड्स देखो, उनसे क्या हो जाता है, यू इजीली फाइंड आउट कि फैक्ट आपका क्या गिवन है. डू नॉट स्पेंड लॉट ऑफ टाइम ऑन वन क्वेश्चन. एक ही पे सारा टाइम स्पेंड नहीं करना. इफ यू कैन नॉट फाइंड द फैक्ट, अगर आपको नहीं मिल रहा, प्रोबेबली हो सकता है कि वो आपका आंसर क्या हो, नॉट गिवन. समटाइम्स वर्ड लाइक यस, नो, नो, नो इन्फॉर्मेशन भी यूज किए जाते हैं. ये स्लाइटली डिफरेंट होते हैं. इसमें आपको यू हैव टू लुक फॉर ओपिनियन. ये ओपिनियन बेस्ड जैसे होता है, fact based नहीं होता. So instead of focusing on only one keyword, try to read sentences. Complete sentence को read करो, identify करो, match करो fact को with the given and accurate information. Once you feel कि particular fact आपका match करता है text के साथ, and to know if the fact is true or false, you must need to keep in mind कि fact अगर true है तो वो exact match होना चाहिए. अगर आप अनश्योर हो और आपको अंडरस्टैंड नहीं, समझ नहीं पा रहे सिनोनिम्स को, देन यू कैन मार्क इट एज नॉट गिवन, राइट. अंडरलाइन करो उन वर्ड्स को व्हिच यू फील दैट दीज आर करेक्ट आंसर, सो दैट यू कैन रेफर देम एट द एंड. नाउ लेट्स सी दिस. इस एक्सरसाइज को देखते हैं.
So this is an exercise, life and work of Marie Curie. And these are the questions. So take some time to read this, but उससे पहले आपको क्या करना है? Questions को read करना है. So quickly read the questions and then read the paragraph. So as you can read that the first question is Marie Curie's husband was a joint winner of both Marie's Nobel Prize. तो यहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड स्टेटमेंट है कि क्या पूछा जा रहा है कि मैरी क्यूरी का जो हस्बैंड है वो जॉइंट विनर था बोथ मैरी के नोबेल प्राइजेस में. तो हमें ये चेक करना है कि क्या वो मैरी क्यूरी का जो हस्बैंड है वो बोथ प्राइजेस में जॉइंट विनर था या नहीं, राइट. सेकंड इज मैरी बिकेम इंटरेस्टेड इन साइंस व्हेन शी वाज अ चाइल्ड. मैरी इंटरेस्टेड थी साइंस में, राइट, जब वो चाइल्ड थी तब से. Mary was able to attend the Sorbonne because of her sister's financial contribution. So Mary attend कर पा रही थी Sorbonne University को because उसकी sister ने उसको financial contribution दी थी. So let's look at हम first वाला answer सबसे पहले find करेंगे because यहाँ sequence में. So Marie Curie's husband was a joint winner of both Marie's Nobel prizes. Let's see ये answer हमें कहाँ मिलता है. First paragraph से हम start करेंगे. So do the skimming quickly and look for your keywords. So here I got born Maria Sklodowska in Poland, this, and was twice a winner of Nobel Prize. With her husband, Pierre Curie and Henry Becquerel, she was awarded the 1903 Nobel Prize for Physics and was then sole winner of 1911 Nobel Prize for Chemistry. So दो प्राइज उसने विन करे थे, राइट. फर्स्ट प्राइज था उसका 1903 नोबेल प्राइज, उसको फिजिक्स के लिए मिला था. एंड सेकंड था उसका 1911 का एक नोबेल प्राइज, उसको केमिस्ट्री के लिए मिला था. सो फर्स्ट प्राइज तो उसका विद हर हस्बैंड था, बट सेकंड की वो सोल विनर थी. दैट मीन्स दोनों प्राइजेस में उसके हस्बैंड जॉइंट विनर नहीं थे. एक प्राइज में उसके जॉइंट विनर थे उसके हस्बैंड, बट सेकंड में वो सोल विनर थी. सोल मींस अकेले. सो दैट मींस दिस आंसर इज फॉल्स. ये ट्रू तो नहीं है, राइट. मैरी बिकेम इंटरेस्टेड इन साइंस व्हेन शी वाज अ चाइल्ड. अब मैरी जब अपनी चाइल्ड एज में थी वो इंटरेस्टेड थी साइंस में. तो लेट्स सी दिस. From childhood, Mary, remarkable for his prodigious memory, at the age of 16, won gold medal on completion of her secondary education because her father lost his saving through bad investment. And then she had to work as a teacher from her earnings, this and this. So I'm not able to find any information that she became interested in science. यहाँ पे लिखा है कि उसकी मेमोरी बहुत अच्छी थी, एज ऑफ 16 में शी वॉन गोल्ड मेडल भी, ठीक है, बट ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा कि शी वॉज इंटरेस्टेड इन साइंस व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड. सो दिस इज नॉट गिवन. थर्ड क्वेश्चन, मैरी वॉज एबल टू अटेंड सॉर्बन बिकॉज ऑफ हर सिस्टर्स फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन. तो क्या मैरी ने अटेंड करी थी यूनिवर्सिटी उसकी सिस्टर की कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से? In 1891, this promise was fulfilled, and Mary went to Paris and began to study at Sorbonne. She often worked far into the night and lived. Okay, so see here. She then had to work as a teacher. From her earnings, she was able to finance her sister Bronia's medical studies in Paris on the understanding that Bronia will in return. अच्छा, तो उसने अपनी सिस्टर की हेल्प करी थी मेडिकल स्टडीज के लिए, तो ब्रोनिया ने इन टर्न उसकी हेल्प करी थी एजुकेशन के लिए. तो दैट मीन्स वो उस प्रॉमिस के लिए जो फाइनेंशियली हेल्प उसने करी थी, लेटर उसने उसकी हेल्प करी, तो तभी वो यूनिवर्सिटी जा पाई थी, राइट. सो दिस इज ट्रू. So you can check your answers here. First one is false, second is not given, third one is true, right?
So I hope it is clear. True, false, not given. Let's look at now matching heading question. Matching heading questions क्या होते हैं? Where you are supposed to match headings. आपको headings find out करनी है, right? मैच करनी है headings to their respective paragraphs. Paragraph से आपको मैच करना है heading को. तो सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप इसको करना है. वेरी फर्स्ट इज कि आप रीड करोगे हेडिंग्स को. रीड करो हेडिंग्स को फर्स्ट, तो कंप्लीटली आप समझ आए मीनिंग. इसको करने के लिए आपको ईच हेडिंग को क्विकली रीड करना है और फोकस करना है कीवर्ड्स पे. कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जिसमें आपकी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि नाउन्स, नेम्स, प्लेस, डेट्स, थिंग. सेकेंड थिंग इज आपको अंडरस्टैंड करना है हेडिंग्स को एंड पैराफ्रेज को. ईच हेडिंग इज यूनिक बट कुछ कुछ सिमिलर भी होती है. सो फोकस करो उन कीवर्ड्स पे अंडरस्टैंड करने के लिए सबटाइटल को कि डिफरेंस क्या है हेडिंग्स में, एंड देन पैराफ्रेज करो हेडिंग्स को. अब पैराफ्रेजिंग क्या होती है? पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है जब आपको सेम मीनिंग गिवन है और वर्ड्स डिफरेंट है. सो सेम टेक्स्ट है आपका, डिफरेंट वर्ड्स है विदाउट लूजिंग द मीनिंग ऑफ टेक्स्ट इटसेल्फ. So since words in the passage are different from words in the headings, it is important कि paraphrase करो heading को. Synonyms का use करो keywords में अपनी headings को find out करने के लिए answer more easily in the passage, right? Third step is skim करो each paragraph. Skim read करो after you read the headings and paraphrasing. Skim read each paragraph. Skim reading क्या होती है? Skim reading मतलब स्पीड रीडिंग, जब आप क्विकली रीड करते हो अपने पैराग्राफ को ताकि आपको एक मेन आइडिया मिल जाए. अवॉइड रीडिंग ईच एंड एवरी वर्ड एंड स्पेंड नो मोर देन अ मिनट और ईच पैराग्राफ. एक मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगा. फोर्थ स्टेप इज रीड करो फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ. जब आप स्किम कर लेते हो पैराग्राफ को, रीड करते हो फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस ऑफ ईच पैराग्राफ, तो उसमें मोस्ट ऑफनली आपको मेन आइडिया मिलता है. अब मेन आइडिया क्या होता है? मेन आइडिया का मतलब होता है, मेन आइडिया ऑफ पैराग्राफ इज द ऑथर्स मैसेज जो आपको टॉपिक के रिगार्डिंग दिया जाता है, तो वहां पे वो एक्सप्रेस किया जाता है. नेक्स्ट इज मैच करो हेडिंग को, राइट? आफ्टर रीडिंग द फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंसेस, मैच अप करो अपने मेन आइडिया को विद द करेक्ट heading. Now some tips, tricks and strategies for your matching heading. Do not reuse any headings as each heading can be used only once, right? When you have headings that are not used, जो use नहीं है, don't try the process of elimination technique. इस question type में आप वो नहीं कर सकते. Do not write words or phrases from title as your answer. Answer will be letter. A, B, C होगा या रोमन नंबर होगा जो भी रिप्रेजेंट करेगा हेडिंग को. डू नॉट रीड एंटायर पैसेज. एंटायर पैसेज को रीड नहीं करना. इंश्योर करो कि आप स्किम रीड करो मेन आइडिया ईच पैराग्राफ को, जिससे आपका टाइम सेव हो जाएगा. पैराफ्रेज करो हेडिंग्स को, रिकॉग्नाइज करो सिनोनिम्स को और सिमिलर वर्ड्स को. मेक श्योर कि जो आपकी हेडिंग्स हैं वो रिफ्लेक्ट करें मेन आइडिया ऑफ पैराग्राफ को, नॉट स्पेसिफिक डिटेल्स को. पे अटेंशन टू फर्स्ट, टू एंड लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ कि ईच पैराग्राफ क्या प्रेजेंट कर रहा है, मेन आइडिया ईदर एट द बिगनिंग या फिर एंड में. डिस्टिंग्विश करो मेन आइडियाज एंड सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन को पैराग्राफ में. ये आपकी बेस्ट स्ट्रैटेजी है. रिमेंबर दैट एग्जैक्ट वर्ड्स मे नॉट बी यूज्ड, सो हमेशा सिनोनिम्स को फाइंड आउट करो, राइट? सो लेट्स डू दिस एक्सरसाइज क्विकली. हम ये एक्सरसाइज करते हैं, इसमें आपको हेडिंग बतानी है ईच पैराग्राफ की. So let's start with section A. Para A read करते हैं. The role of governments in environmental management is difficult but inescapable. Sometimes the state tries to manage the resources on its own and does so badly. Please read it along with me. मेरे साथ इसको read करो, right? Skim करना है. However, government act in an even more harmful way. They actually subsidize the exploitation and consumption of natural resources. A whole range of policies from farm price support to protection for coal mining do environmental damage and often make no economic sense. Scrapping them offers a twofold bonus: cleaner environment and a more efficient economy. Growth and environmentalism can actually go hand in hand. If politicians have the courage to confront the vested interests
that subsidies create. Now see this. What they are talking about. They are talking about the role of governments in environmental management is difficult but inescapable. Is the topic sentence है ना, ये topic sentence है paragraph का. Then यहाँ पे आपको resource management and whole range of policies are example के तौर पे बताए हुए हैं कि ये दो examples है किसके, environmental management के. तो अगर आप headings में देखो, तो headings में you can see only the fifth one, government and the management of environment, is going to suit this, right? So यहाँ पे गवर्नमेंट और उसकी मैनेजमेंट कैसे हो रही है एनवायरमेंट की वो बताया हुआ है. सो दिस इज फिफ्थ वन. सी द नेक्स्ट बी पैराग्राफ. बी पैराग्राफ में आपको क्या दिया है? नो एक्टिविटी अफेक्ट्स मोर ऑफ द अर्थ सरफेस देन फार्मिंग. It shapes a third of the planet's land area, not counting Antarctica, and the proportion is rising. World food output per head has risen by 4% between the 1970s and 80s, mainly as a result of increase in the yields from land already in cultivation, but has also become more land has been brought under the plough. Higher yield have been achieved by increased irrigation, better crop breeding, and a doubling in the use of pesticides and chemical fertilizer in the 1970s and 80s. So आपने जब इसको skim करा, you some people can believe कि first sentence में क्या लेगा, no activities affect more of earth surface than farming as the main idea, और आप इससे मेन आइडिया समझने लग जाओगे. बट सी, अगर जब आप इसको रीड कर रहे हो, रेस्ट ऑफ पैराग्राफ इज ऑल अबाउट फूड आउटपुट, है ना, कि वर्ल्ड फूड आउटपुट क्या है, 4% 70s में 80s में, देन कितना हायर यील्डिंग हुआ ड्यू टू इंक्रीज इरिगेशन. सो दिस इज फार्मिंग एंड आउटपुट, सेवेंथ वन. डू नॉट गेट कंफ्यूज विद फर्स्ट स्टेटमेंट से, फर्स्ट स्टेटमेंट से कंफ्यूज मत हो जाना. Third paragraph, all these activities may have damaging environmental impact. For example, land clearing for agriculture is the largest single cause of deforestation. Chemical fertilizers and pesticides may contaminate water supplies, more intensive farming, and the amendment of fallow periods tend to exaggerate soil erosion. And the spread of monoculture and the use of high-yielding varieties of crops have been accompanied by the disappearance of old varieties of food plants, which might have provided some insurance against pests or diseases in the future. Soil erosion threatens the productivity of land both in rich and poor countries. United States, where the most careful measurements have been done, discovered in 1982 that about one-fifth of its farmland was losing topsoil at a rate likely to diminish the soil productivity. The country subsequently embarked upon a program to convert 11% of its cropland to meadow or forest. Topsoil in India and China is vanishing much faster than in America. So they are talking about all the activities may have damaging the environmental impacts. ये इसका टॉपिक सेंटेंस है. So these activity refers to farming, जो भी पैरा बी में बताई गई है. Now if we look at, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन भी दिया है आपको, वाटर कंटामिनेशन भी दिया है, सॉइल इरोजन भी दिया है, राइट. सो दैट मीन्स व्हाट दे आर सेइंग इज कि एनवायरनमेंट का क्या इम्पैक्ट है मॉडर्न फार्मिंग, राइट. सो दे आर टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, सारे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बताए हुए हैं. सो द आंसर विल बी सेकेंड वन. प्लीज सी द आंसर एक्सप्लेनेशन फॉर एनी डाउट्स. So you are supposed to read the paragraph. Skim करोगे अगर आप अच्छे से, आपको बहुत easily answers मिल जाएंगे. Let's see next type of question, matching information question. So matching information questions क्या होते हैं? जब आपको match करना है paragraph को, इसमें आपको you are required to match sentence, आपको sentences को match करना है with the information जो कि किसमें है, different paragraphs में है. तो यहाँ पे आपकी strong skill होनी चाहिए paraphrasing के लिए. You will need to prepare lots of paraphrases for the statement ताकि आप locate कर पाओ right paragraph को जिसमें आपकी information, और answers यहाँ पे in order में नहीं होते, ठीक है.
Now, tips for IELTS paragraph matching is read through the questions. पहले questions को read करो. Think of ways to paraphrase your keywords. Try to locate keywords or the paraphrases in the paragraph. Answers do not come in order. Answers आपके order में नहीं आते. Your answer should be a letter, not words. Start with the easiest question first. आपको easy question के साथ सबसे पहले start करना है. Now let's see this. This is your exercise. This is your passage. A, B, and C. There are 3 paragraphs. So question 1 to 5, in which paragraph A to C is the following information found? ये आपकी informations है. First information, the success of Roald Amundsen was celebrated worldwide except in one country. तो ये कौन से paragraph में है? A में है, B में है कि C में? Amundsen only heard about the death of Scott after he had reached the South Pole. The base at the pole bears both Amundsen's name and Scott. Amundsen had originally planned an expedition when Amundsen decided. So let's start with first one. हम first वाला देखते हैं सबसे पहले. Success of Roald Amundsen was celebrated worldwide except in one country. So let's start with A paragraph. कि हमें कोई information मिलती है. Quickly you have to skim. Done with the skimming of A paragraph. Now I'm beginning with B1. No. C1. Now see here, जो सक्सेस थी रॉल एमर्सन की वो सेलिब्रेट हुई थी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट इन वन कंट्री. सो द स्टोरी of Scott's heroic failure overshadowed its achievement in United Kingdom. Unable to accept, a Norwegian had been the first person to set foot in the South Pole, but not in the rest of the world. But not in the rest of the world. Amundsen's decision to keep his true plan secret until the last moment was criticized by some. So इसका मतलब कहाँ पे हमारे को ये information मिल रही है? It is in the C paragraph कि वो world wide celebrate हुई थी except one country में नहीं हुई, right? Next one, Emerson only heard about the death of Scott after he had reached the South Pole. So I guess we have read it here जब हम skimming कर रहे थे कि उसको डेथ के बारे में पता चला था. He had reached the South Pole. हाँ. So see here, Amundsen and his team returned safely to their base and later learned that Scott and his 4 companions had died on their return journey. तो जब वो साउथ पोल पहुंच गए थे उसके बाद उनको पता लगा था कि डेथ हो गई है स्कॉट की. So this is in paragraph A. Third one, the base at the South Poles bear both Amundsen names and Scott. So the base at South Pole bears both Amundsen name and Scott. Let's find this. I guess it's here. ये भी यहाँ पर है. Decision to keep it secret until the last moment was criticized. Recent polar historians, I mean, more fully recognize the skill and the courage to party. The permanent scientific base at the pole bear his name together with that of the Scott. तो यहाँ पे ये देखो third last statement में third question given है. So this is C paragraph. Amundsen had originally planned an expedition to the North Pole. North Pole का expedition, I guess ये यहाँ पे था.
Amundsen plan has focused on the Arctic and the conquest of the North Pole by means of an extended drift in icebound ship. He obtained the use of this and this. Preparation for this expedition was disrupted when in 1909 the rival American explorer Frederick Cook and the Robert E. So this is here. जब उन्होंने नॉर्थ पोल का क्या करा था एक्सपेडिशन करा था तो दिस इज इन बी पैराग्राफ उन्होंने प्लान करा था राइट फिफ्थ वन व्हेन एमिटसन डिसाइडेड टू एम फॉर साउथ पोल ही डिड नॉट रिवील हिज इंटेंशन उसने अपनी इंटेंशन रिवील नहीं करी थी So Amundsen then changed his plan and began to prepare for a conquest this and this extent. So he believed that he's not going to expedition यहाँ हुआ था हाँ देखो तो यहाँ पे उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी साउथ पोल के लिए और उसने अपनी इंटेंशंस यहाँ पे रिवील नहीं करी थी राइट और उसने एम करा था साउथ पोल के लिए राइट अमृतसर ने अपना प्लान चेंज करा बिगिन करा कि वो कॉन्क्वेस्ट करेगा साउथ पोल के लिए अनसर्टेन टू द एक्सटेंट टू विच द पब्लिक सो उसने नहीं बताया था राइट ये ऑब्जेक्टिव सीक्रेट था उसका द ब्रिटिश डिड नॉट सेलिब्रेट अमृतसर सक्सेस एज डिड अदर कंट्रीज ड्यू टू द डेथ ऑफ स्कॉट तो ये तो वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट में यहाँ पे क्लियर है कि ब्रिटिश ने डिड नॉट सेलिब्रेट करा था बिकॉज यूनाइटेड किंगडम में नहीं सेलिब्रेट हुआ था राइट ड्यू टू क्योंकि स्कॉट की डेथ हो गई थी सो स्टोरी ऑफ स्कॉट्स हेरोइक फेलियर ने ओवर शैडो कर दी थी एक्सपेडिशन वाइडली अपलॉड हुआ था बट यूनाइटेड किंगडम में नहीं हुआ था राइट नॉट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ब्रिटिशर्स ने नहीं सेलिब्रेट करा था so you can check all your answers here any doubts any queries you can write in the later on in the comment section so please keep practicing and keep learning and watch your IELTS journey soar do not miss out our 15 days course you can rewatch this session on the baby code application and YouTube any doubts any queries please let us know and thank you so much for joining our session and do practice for your true false not given matching heading and matching information. Three topics we have covered today. Very soon we are going to cover all the reading module, all of your IELTS in 15 days class. Okay. So bye. Take care all of you.